Morning everyone, myself Dr. Nisha Malik, Assistant Professor from Department of Physiotherapy, RPIIT, Karnal. So this is a continuation of DDH in walking child in older children. Complaints of limping, waddling, bilateral DDH, lumbar lordosis, limitation of hip abduction, toe walking, wide perineum, etc. Then screening. So in screening, all neonates should have a clinical examination of hip instability. Risk factors are breech presentation, family history, torticollis, oligahydramnios, metratarus adductus, USG स्क्रीनिंग होगी ये इसकी. देन क्लिनिकल एंड USG के बारे में दोनों नॉर्मल है. देन नॉर्मल होगा क्लिनिकल में एंड USG में अब नॉर्मल. देन रिपीट 6 वीक के बाद देखेंगे तो नॉर्मल साइन अब नॉर्मल साइन के बारे में ये एक फ्लो चार्ट है. देन एक्सरे वॉन रोजन व्यू में क्या देखेंगे हम. हिप अब्डक्टेड 45 डिग्री एंड मीडियली रोटेटेड एंटीरियो पोस्टीरियर. वी ड्रॉ a line though the central axis of the femoral shaft. In normal hip, ossific nucleus will be inside the acetabulum. In dislocated hip, it will be above acetabulum. Then Andron von Rosen line. AP X-ray, hip in 45 degree abduction and IR internally rotated. Describe the longitudinal relationship between long axis of femur and acetabulum. So X-ray में जो Shenton line है, semi circle between the femoral neck and upper arm of the obturator forearm. In dislocated hip, this line is broken. ये सारी लाइंस शो की गई हैं कि कहाँ पे कौन सी लाइन है. शेंटन लाइन यहाँ पे होती है नीचे एसिटाबुलम एंड हेड ऑफ फ्यूमरस के बीच में. ट्रीटमेंट. द अर्लियर द बेटर. द बेस्ट टाइम फॉर ट्रीटमेंट इन न्यूबॉर्न पीरियड. इट डिपेंड ऑन द डिवाइस ऑफ द एज ऑफ द पेशेंट. गोल इज टू फ्लेक्स एंड abduct hip, reduce femoral head and maintaining it. Then the goals in the management of DDH are to obtain and maintain a concentric reduction of femoral head within the acetabulum to provide the optimal environment for the normal development of both the femoral head and acetabulum. The later the diagnosis of DDH is made, the more difficult it is to achieve these goals. The less potential there is for acetabular and proximal femoral remodeling, and the more complex are the required treatments.